मैम आवाज नहीं आ रही। ओके, अब आवाज़ आ रही है आपकी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है अब? जी जी आ रही है। अच्छा, here in this lecture I would like to tell you about arrays, right? So arrays are the data structure in which you can store data items of the same data type, right? So first of all, I would like to review the variables, right? So for example, you have a variable a. I have declared it int a. So what happens? There is a memory location in which a memory location is being reserved for this variable a, and whatever the value you assign to variable a will goes in that memory location. So here, what if you want to store three values of the same data type? Here you have a, b, c. Here you have three variables, and you want to assign three values to these variables. So I have assigned 5 to a, and 6 value to b, and 7 value to c. So let's suppose this is memory location corresponding to a. Then this is memory location for b. So here I have stored 6 value. Then again I have variable 7 in 6 c variable in which 7 is being assigned. So in order to store integer data type values, for example, I want to store 3 values. So what I have done, I have declared 3 variables a, b, c. 3 variables have been assigned in order to store these value 5, 6, 7. So what will happen if I want to store 100 values of data type integer? What will happen? I have to declare 100 variables. It means a, b, c, d, it will continue, and I have to look for more variables, right? And it will go up to 100 variables. 100 variables, and it will be very difficult for me. And for each 100 variables I might be using this like a, b, c, d, e, f, right? And it's going on up to 100 variables, right? And for each variable I am assigning some value. So it's a very lengthy process, right? Is it clear? For variable, for a single variable, what's going on? A memory location has been reserved, and we can store a value according to the data type. If it's integer, I can store the values like 5, 6, 7, right? So first of all, variable, and then if I want to store number of values of the same data type, then I have to declare number of variables for that, right? So simple thing using arrays, what can I do? Arrays, the advantage of array is that I can simply write here int. Let's suppose array here is the name of array is a, and then in the square brackets I will write simply 100. I will write here 100. Instead of writing these, instead of declaring 100 variables, right? Using arrays, what can I do? I can simply write int. What is the name of array? Here name of array is a, and in the square brackets I will write here 100. So using when I declare this array, what will happen? um, a consecutive memory locations will be reserved, and here the array name is a. Here
array name is A, and how many locations will be reserved? 100 locations will be reserved for this array automatically. Instead of declaring 100 variables separately, I can simply write here A, and in the square brackets I will write the size of this array. Here the size of the array is 100. It means 100 items can be stored in this array. 100 memory locations have been reserved in order to store 100 values, right? So here it's up to right, these are 100 memory locations. So when I want to access, let's suppose I want to access this memory location, it's simply when I call it as A. If I want to access this memory location, I just simply call it as B, C, D, right? But in arrays, how can I access the, let's suppose the first location? How I can access this first location? I will write the name of the array, right? This is here, the name of array is A, and in the square bracket I will write, if I want to point first memory location, here I can write here 0. So this is also called index. Here the index is 0. So it means that the first element, its index is 0. If I want to access the second element of this array, how I will write here? Here I will write A, and then in the square bracket I will write here 1. The third element, how I will access it? A, and in the square bracket I will write here 2. And this process will be continued up to A of A, in the square brackets I will write here A99. So these memory, for 100 elements, the first element starts with the index 0, and the last element it's end up at the index 99. So total of 100 elements are there. So instead of declaring the variables separately, choosing different names for the variables, and then accessing these variables, assigning these values, retrieving their values, printing their values, right? I can simply use array. In the array, I can just write first that I will declare its data type, and then the variable array name, and I will also declare what is the size of this array. So here it's simply 100 elements. So array is actually the collection of collection of data items of the same data type. Data type must be same of all these elements in an array, right? So array or data structure consisting of related data items of the same data type. It's used to process a collection of data of same data type. Let's suppose you can have a list of names, a list of temperatures, right? So if one of the element is in an array is names, it means that all the elements in an array should be names. If one of the element in an array is temperature, then all the remaining data items in the array must also be temperatures. So arrays are right, it must have same data type. It can be either integer or character, it can be double, float, right? So the variables making up the array are referred to as index variables. So in an array, you have variables here, a of 0, a of 1, a of 2. So these are all the variables in an array. All these variables, these are called index variables. These variables have an index, right? 0, 1, 2, 3, 4. Or you can say subscriptive variables, or you can say these are the elements of an array, right? So array is a consecutive memory locations for the collection of a data of same data type, right?
इसमें आपके पास जो वेरिएबल्स हैं उसमें आपके पास क्या होगा, इंडेक्स होते हैं, अरे है, ठीक है, अरे का अपना एक नाम होगा, जैसे हमने इसको नाम दिया ए का, ठीक है। अब ए में हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो ए ऑफ 0 आप लिखेंगे, मीन्स कि आप नेम वेरिएबल नेम है लेकिन इंडेक्स वेरिएबल्स है, ठीक है, इंडेक्सेस है इसके अंदर 0 1 2 3 अप टू 99 if you have 100 elements in an array, right? The number of index variables in an array is the declared size or size of the array. So in the example that I explained to you, it was a of 100. It means the size of the array was 100, right? The largest index is 1 less than the size, and the first index value is 0. So in the example which I explained you, the first index was 0, a of 0, right? And the largest index, it was 99, right? So which is 1 less than the size of the array. Size of the array was 100, and the largest index that we found, it was a of 99, right? So 99 was the largest index in that array. So when declaring an array, if you want to declare an array, the programmer must specify its name. You have to specify its name, just like we did in the example. We specify the name of array as a, and we have to also declare the type of array. In our example, we declare type of array as int, and you have also have to declare the number of elements, array size. So we declare in our example size of array as 100. And here is the general format for declaring an array. You have to write the type, array name, and in the square brackets you have to specify what is the size of that array, right? Examples: int, right, this is the data type. C, this is the name of the array, and then the square brackets, what you specify here, 10. What does it mean? This is the size of the array. What does it mean? It means that this array must have 10 elements. This can store 10 elements. This is an array of 10 integers simply, right? And the other example, it's float. Variable name is d, and here 3284 elements of float can be stored, right? You can declare multiple arrays of the same data type, right? Just like you declare different variables, you can also declare different or multiple arrays of the same data type. So it's simply int b, in the square brackets it's written here, it's 100 comma x 27. So it's simple, it's just saying that you can declare multiple arrays here. One of the array is b, its data type is integer, it have 100 elements. And here it's another array which name is x, and here the number of variables, the number of elements that it can store is 27. Both b and x have the same data type, integer, right? So it can array can have index variables of any type, integer, character, float, double, right? All the variables in an array are of the same type, but within an array all the elements must be of the same data type. So if the array is integer, so all the variables, all the elements in an array are of the same data type. If the array is integer, it means all the elements are of data type integer. So this is the base type of the array, right? An index variable can be used anywhere an ordinary variable of the base type is used. So whatever you do, whatever you have done before using different variables, like if you remember your example of finding the maximum number out of 3 numbers, you had the program before your midterm that you have to find the maximum number out of 3 integers. So first of all you declare
three different variables, num1, num2, num3, and then you write a function in order to find the maximum of all these three numbers, right? So whatever you have done, whatever the processing, whatever the calculation that you can done using different variables, the same processing can be done using these arrays. But here the difference is that you have a different syntax for the array. You have the variables in array. An array can be accessed differently, right? Like if the first element, the first variable, if you want to access from the array, you write a index 0, a index 1, a index 2. So the program that you did before midterm, that was to find the maximum of three numbers, the same program can be done using arrays. There you define the three separate variables, num1, num2, num3. Instead of that, using array, you can simply write here a. Let's suppose you declare array for that as num, right? Let's suppose there you can declare here int num, and here how many integers you have? Three integers. So first of all, you will declare array. Here the array name is num, and what is the size of the array? It's 3. So if you want to access the first element of this num, how you will write? Num, in the square brackets you will write num of 0. Similarly, num of 1 and num of 2. So whatever you have done in that example for num1, num2, num3, instead of writing num1, num2, num3, you will write num of 0, num of 1, num of 2, index 2, right? Is it clear? जी क्लियर हुआ है आपको? Yes, ma'am, clear. So using this square brackets in an array declaration encloses the size of array. ठीक है, ये मैंने already आपको बताया है. When referring to one of the index, one of the, so you just simply write in the declaration, you simply write here the size of the array. Here the size of array is 5. But if you want to access one of the variable in this an array, one of the element in this array, you simply write let's suppose score of the this is one of the indexed variables, right? So here score of 0, score of 1, 2, 3, 4. These are the 5 elements, right? To refer to a particular location or element in an array, specify the array name and the position number. You just, if you want to access one of the variable, one of the element in an array, you just write the array name and simply the position number, right? For example, C of 0, C of 1, and C of n minus 1, where n is the size of the array. So if n is 100, the last element, the largest element in this array would be C of 99. So here is the graphical view for the array, right? Here consecutive memory location have been reserved for an array, and the first element here the array name is C. This is complete array, its name is C, and if I want to access its first element, I will write C of 0. For second element, C of 1, and up to C of 11. So total of 12 element array is there with the name C. Array elements, like other variables, you can do the same processing that you have done with ordinary variables. You can do the same variables with processing and calculations with these using these arrays. So as you can assign the value, any value to the arrays. Like if you want to assign 3 value
to the first element of this array name C. So you simply write C of 0 equal to 3. 3 value will be assigned to the first element of the array with the name C. You can also print the first element of this array name C to the screen. So you are simply just writing here C out C of 0. What does it mean? Whatever the value is there in the first element of the array, it will be printed on the screen. You can also perform the divisions, right? You can also do printing of some of the first three elements. Whatever you want to do, the processing that you can do with the ordinary variables, you can do here with the arrays. You can also perform operation inside the subscript. This is called a subscript, right? So here you can write 5 minus 2, which is equals to 3, right? शर्त यही है कि आपके पास अगर आप यहाँ पे कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो वैलिड सबस्क्रिप्ट आपको शो करे, ऐसा ना हो कि इनवैलिड हो, ऐसा ना हो कि आप लिखें यहाँ पे 150 माइनस 10 करें तो ये क्या इसका सब्सक्रिप्ट बन जाएगा, 140 बन जाएगा. 140 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. लेट्स सपोज उसी एग्जांपल को अगर हम ले लें जिसमें हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स है तो इसके द वैलिड सब्सक्रिप्ट्स कहाँ से होंगे? इट्स रेंज विल बी फ्रॉम 0 up to 99. So these operation must conclude to some valid subscript, right? So 140 is not a valid subscript if you have a total of 100 elements, right? For the 100 elements, the valid subscripts are from 0 to 99. Okay, loops and arrays. For loop. So what was the loop? Loop was the repetition structures, right? You repeat the same operation, same action. You want to repeat the same action in the repetition structure, right? You just write that statement in the repetition structure, and that statement will be repeat for some definite number of times, right? So for loop was one of the repetition structure, and whatever you want to repeat an action, you just simply write that action within this for loop. So for loop are commonly used to step through the arrays. So here we are using for loops to step through the arrays, right? Set each element. So in this example, if you can see, in this example, if you can see that if you don't have an array, what will happen? If you don't have an array and you have different variables, usually what you do, a equal to 5. If you want to assign values to these variables, you write a equal 5, b equal 6, c equal to 7, and 100 elements you have, so you assign 100 elements, 100 values to these 100 variables. In this example 2, so in this example too, if you have, let's suppose, a variable a, if you want to assign the value to the first element of this array, let's suppose I want to assign here 5. So I have to write it like this: a of 0 equal to 5, and then second element, this is a of 1, which is equal to 6. This is the second element, and so on up to a of 99. If I have 100 elements, then the last element in this array will be a of 99. Here let's suppose I want to assign here 10 value. So I have to write like this, right? You can use for loop. You can use for loop to assign, if you have let's suppose if you want to assign some sequence in the elements of your array, or if you want to print elements of an array, you can simply write here
for loop. How you will write a for loop? For I equal to 0, as the indices in an array starts from 0, so here my for loop will be initialized with 0. Instead of 1, I have to initialize I with 0. Why with 0? Because the first element in an array starts with 0, right? And then whatever the maximum limit of an array according to the size of the array. So I less than 5, it means that this is an array of 5 elements, and here the last index must be 4. Last index is size minus 1. First index is starting from 0, so the last index is size minus 1. So similarly, you can use the same in this for loop. For in the for loop, first index is 0, and the last limit you have to go up to size minus 1, and then I plus plus. So this I can be used as a subscript of this array, right? This I can be used as a subscript. This I can be used as an index of an array. So you can access the elements of an array, right? Here the array name is score. Here in this example, array name is score, and if I want to, let's suppose, print first element, sorry, all the elements of this array, right? So this for loop is very useful in order to access each element of an array. So in the first iteration, I is 0. It means here see out score, score with index 0. Whatever the value which is stored in the first element of the score array will be printed on the screen. And then in the second iteration, when I becomes 1, the second element, whatever the value is there in the in the second location of an array, will be printed on the screen. And when I becomes 3, sorry, when I becomes 2, the third element, when it becomes 3, it's 4 element, when it becomes 4, it's actually the fifth element of the score array, it will be printed automatically. So instead of writing C out score 0, and then C out score 1, C out score 2, C out score 3, C out score 4, I just simply write here score of I, and this I is being controlled by this for loop. So in the for loop, it's starting from 0 and it's going up to the last index, राइट? तो फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम सिंपली अरेज को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को आप प्रिंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अगर आपके पास ये फॉर लूप नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा, लेट्स सपोज 5 एलिमेंट्स की अरे है, इसका अरे नेम हमारे पास स्कोर है, ठीक है? इसका मतलब है कि स्कोर ऑफ 0, स्कोर ऑफ 1, स्कोर ऑफ 2, स्कोर ऑफ 3, स्कोर ऑफ 4, ये 5 एलिमेंट्स हैं आपके पास। इन 5 एलिमेंट्स में जो वैल्यू पड़ी है उसको आपने प्रिंट करना है। जैसे आप वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं तो आप क्या करते हैं, सी आउट ए, सी आउट बी, सी आउट सी, ठीक है? अब हमारे पास ये अरे है, ठीक है? और अरे में हम फर्स्ट सेकंड एलिमेंट, थर्ड, अप टू जितना भी हमारे पास अरे साइज है, ये सारे एलिमेंट्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो हम इसको सिंपली क्या कर रहे हैं, फॉर लूप के अंदर लिख रहे हैं, और फॉर लूप के अंदर जो इसका कंट्रोल वेरिएबल आई है वो किस लिए यूज़ हो रहा है, इंडेक्स के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो जब आई 0 होगा तो हम फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, जब आई 1 होगा तो सेकंड एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं, जब आई 2 हो जाएगा तो थर्ड एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सारी की सारी अरे। सो फॉर लूप आर कॉमनली यूज्ड टू स्टेप थ्रू अरेज, ठीक है? आपने जितने भी अरेज है इसको गो थ्रू करना है, स्टेप थ्रू करना है, तो उसके लिए आप लूप्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? To initialize an array, when it's declared, the value for the index variable are enclosed in braces and separated by commas. ठीक है? If you want to initialize the array at the time of declaration, so what is the syntax of that? This is an example. Here you have int children, in the square brackets 3 is written. What does it mean? You have an array with the name children. Its data type is integer, and how many elements you have? You have 3 elements. I am not seeing like this Right? example.
यस आ गया अभी। जी साजिद, आप कुछ कह रहे हैं? वो एग्जाम्पल शो नहीं हो रहा था उसके लिए, अभी शो हो रहा है। अच्छा अच्छा, अब now we have a children array, three children with a data type integer, and here we are going to assign some values to this array children. So how you can do that? Simply declare that, and you are initializing at the time of declaration. Here it's equal to, using these curly brackets, or you can say this is the braces, right? And here you simply write the elements 2, 12, 11, and these elements are separated by commas. So 2 comma 12 comma 1. So this statement, this is initializing at declaration, right? Initialization at the time of declaration. This statement, single statement, is equivalent to, it's the same, this statement is same as this int children 3. First you declare it, and then accessing each element and initializing it. So this is declaration, simply declaration of the array children with 3 elements. And now I'm accessing the first element children 0. It means this is the first element of the array children, and here I'm assigning 2. And then accessing the second element of the children and assigning it 12. Third element and assigning it 1. So whether you write it this, or you can write this, both have same meaning, right? So there are two ways of initializing this array. So here, okay, here int a10 equals to 5 comma 5. Here it's the same initialization at the time of declaration. Here the array name is 10, sorry, here the array name is a, its data type is integer, and how many elements we have? 10 elements. But here look at this, um, the elements in an array A have 10 elements, right? But the values that we are assigning to this array is 5 comma 5. Only two elements, only two values being assigned to this 10 element array. So what will happen in this case, in which we have a less fewer values which being assigned to the to an array of more elements, right? Here 10 elements and two values are being assigned to this. So what will happen? It initializes a of 0 and a of 1 to 5, and the remaining, so only the first two elements a of 0 and a of 1 will be assigned. So this 5 will be assigned to a of 0, and this 5 will be assigned to a of 1, and then from a of 2 to a of 9, all the remaining elements, you will assign, automatically 0 will be assigned to the remaining elements of this array, right? ठीक है, अगर आपके पास एक अरे है जिसमें आपने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये 10 एलिमेंट अरे है, लेकिन आप इसको सिर्फ 2 एलिमेंट्स असाइन करें इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, तो क्या होगा? पहले 2 एलिमेंट्स को ये वैल्यूज मिल जाएंगी और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 0 वैल्यूज मिल जाएंगी. If values listed in initialization are more than it causes the send. If values listed in the initialization statement are more than the array elements, ठीक है. अगर इसका ऑपोजिट हो जाए कि यहाँ पर लेट्स सपोज a of 3 है और यहाँ पे आपने 10 वैल्यूज इसको असाइन करें, मतलब एलिमेंट अरे का जो साइज है वो कम है और ज़्यादा वैल्यूज आप उसको असाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा? फिर सिंटैक्स एरर आएगा. So if values listed in initialization statement are more than the array elements, if the initialization elements statements are more than the array elements, then it will cause a syntax error. This is another example here, int n of 5 equal to 0. So what's going on in this statement? Here you can see that array name is n, number of elements are 5,
data type is integer, and you is simply assigning 0 to this. So what will happen? Every element in this array will get 0 value, right? If array size omitted, values listed in initialization statement determine size. 5 initializers, therefore 5 element array. So this is another example in which we just omitted this array size. There is no array size here. Here you have this array size. We know that array size is 5, but if there is nothing within this square bracket, it means we don't know the array size. And here we are just simply assigning value 1 2 3 4 5. So whatever the number of these assignments are there according to these initializers, we can have the size of this array. Let's suppose here we have assigned 5 elements in this array, and it means that here I have not declared the size of the array. Automatically, whatever the number of initializers are there, these numbers according to these initializers, the automatically this array size will be declared. So here I have 1 2 3 4 5. It means 5 elements have been initialized to this array. It means there the size of this array n is 5. 5 initializers, 5 element array, if nothing is there in the n size. Initializing the elements of an array to zeros. Following program uses for repetition structure to initialize the elements of a 10 element integer n and prints the array in the tabular form. So this is the C++ program, right? मैम जो आप स्लाइड पढ़ा रहे हैं वो नहीं शेयर हो रहा है। तो आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? पता नहीं तो मुझे हमें लगा कि शायद हमारा नेट का इशू है, वो तो इस वजह से तकरीबन ये जो 10th स्लाइड के बाद आप पढ़ा रही थी उसके बाद कोई नज़र नहीं आया। 11 12 13 अच्छा, ये तो शेयर्ड है। अभी हुआ है सर, मैम अभी हुआ है। नहीं, ये अब नजर आ रहा है। अभी हुआ है, यस मैम। 15th स्लाइड अभी नजर आया। अभी नजर आ रही है इसमें? यस मैम। अच्छा, तो फिर जो मैं जितना पढ़ाया है उसकी समझ आई है या नहीं? इनिशियलाइजिंग की तो समझ आई है, जो इनिशियलाइजिंग में आपने पढ़ा है। अच्छा, ठीक है। चले अब हम इस C++ कोड को देख लेते हैं, ठीक है? इसमें हमारे पास क्या है? int main. Here I have the array of 10 elements, right? Int, it means that the data type of this array is integer. Here the name of the array is n, and how many elements I have? 10. Int n 10, right? It means that I have array name n, its data type is integer, and how many elements I have in this array? 10 elements. So it's simply n is an array of 10 integers, right? And now I'm coming towards the for loop. 10 elements, it means that it must be in the for loop, it must be initialized with 0, as the indices in an array starts from 0. The first element that in an array, it have an index 0, so it's starting from 0. I less than 10. Why I less than 10? Why not I less than or equal to 10? मैम 0 से 9 तक 10th हाँ, 0 एलिमेंट से हो 9 जाएंगे। तक। जी जी, 0 से 9 तक है, इसलिए क्या होगा कि ये हमें इसको लेस देन 10 करना होगा, एंड देन i प्लस प्लस, ठीक है? दिस इज द फॉर लूप. एंड नाउ इन दिस लूप व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज n, then I have index I equals to 0. So in this loop I am just initializing each element of this array n with 0. ठीक है? आपके पास array है n, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं 10 एलिमेंट्स हैं, इन 10 एलिमेंट्स को एक एक एलिमेंट को मैं एक्सेस करती जा रही हूँ, ठीक है? और उसको 0 असाइन करती जा रही हूँ,
ठीक है, 0 असाइन करते जा रहे, ठीक है। सो इन द फर्स्ट आइटरेशन I is 0, so n of 0 equal to 0. This means that I'm accessing the first element and I'm assigning a 0 to that first element. And then in the second iteration, I becomes 1. So n of 1, which is the second element in an array, I'm assigning it 0. And then n of 2, n of 3, n of 4, and within this loop, the last element will be n of 9 equal to 0. So all the elements from 0 to 9, all these elements have been assigned with the value 0, right? So simply I'm just writing these header element and value, and now I'm going to I just want to print the values of in this array, right? Here I have assigned 0 to the elements of the array, and now I want to print the elements of this an array n to the screen, ठीक है। पहले मैंने सिर्फ सिंपली असाइन कर दिया इस अरे n को 0 से, अब मैं इन्हीं वैल्यूज को असाइन हो गया ना, ठीक है। मैं अब स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहती हूँ, तो हमें क्या करना होगा, सी आउट को यूज करना होगा, सही है, सी आउट को यूज करना होगा। सी आउट क्या करने हैं, हम इस अरे के एक एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, तो सी आउट की वजह से क्या होगा, उस इस अरे के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी, ठीक है, वो प्रिंट होती जाएगी। So at the first time j equal to 0, so n of j, it means that n of 0, whatever the value is there, will be printed on the screen. So second time j becomes 1, and then 2, and this process will continue up to 9. So simply this program is just to initialize the elements of array n with 0 and then printing those values to the screen, right? Simple, this is the program. So you can see that we have assigned the values zeros to all the elements of the array, and we are just printing these values to the screen, right? But it's in the proper format, it's in the tabular form, right? So in order to print it in the tabular form, in the proper format, you have to do some more processing, like set w, right? You set the की आवाज कट जाती है बीच में। ठीक है, सेट विड्थ आप यूज करते हैं। सेट w जो है ये एलिमेंट्स की विड्थ को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपके पास ये टेबुलर फॉर्म में आउटपुट जो है आपके पास आ जाएगा। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। ठीक है, मेन हमारा काम अरेज के साथ है, और ये तो सिंपली फॉर्मेट है इसका कि किस तरह से आप ये इसको प्रॉपर फॉर्मेट में शो करेंगे, राइट? Yes, तो sir. प्रिंटिंग, फॉर प्रिंटिंग these are the headers element, set w 13 and then value. So on the screen element is being displayed, and then value is being displayed on the screen, right? And then within this loop we are just printing the value of j. So it means j is 0, j is 1, 2, 3, 4, and j becomes 9 at the end, right? J is being printed. So look at this, the value of j is being printed 0 to 9, right? And then after j you have n of j. It means that n of 0, n of 1, n of 2, whatever the value is there in these locations, right, it will be printed on the screen. So n of 0, this is the first element of array, its value is 0. As we initialized all the elements of array n with 0, so this 0 0 0 0 0 is printed on the screen, ठीक है। हमने सारे एलिमेंट्स को 0 से इनिशियलाइज किया है, तो ऑब्वियसली 0 ही प्रिंट होगा। जब हम इनके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे और प्रिंट करना चाहेंगे तो स्क्रीन पर 0 ही प्रिंट होगा ना, ठीक है। अगर हमने कुछ और वैल्यूज असाइन की होती तो वो डिफरेंट वैल्यूज ही प्रिंट होती, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है, इसकी समझ आ गई है? अगर नहीं आई तो मुझे बताएं, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है।
ठीक है, अरे है आपके पास ना, ठीक है, अरे है, तो अरे को लिखने का अपना एक डिक्लेरेशन का अपना एक तरीका है, ठीक है। किस तरह से आप अरे को लिखते हैं, इंट उसका डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, अरे का नाम लिखते हैं, और जो साइज होता है अरे का वो आप स्पेसिफाई करते हैं डिक्लेरेशन के टाइम। मैम ये जो नीचे जे वाला पोर्शन है तो इसको रिपीट करें, इंट जे इज इक्वल लेस देन 0। कौन सा वाला, ये जे वाला कि आई वाला लूप, इसकी बात करें, लूप की बात करें। ठीक है, अब आप देखें ये हमारे पास जैसे कि ये एग्जांपल है ना, a of 0 equal to 5, a of 1 equal to 6, राइट। मतलब ये a of 0 to a of 9, लेट्स सपोज ये वैल्यूज इसमें पड़ी हुई हैं, इसको हम स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हाउ वी विल राइट अ प्रोग्राम फॉर दिस, फॉर लेट्स सपोज j, any variable you can use here, for I, j, k, l, m, whatsoever. J equal to, as the indices starting from 0, so I will initialize it with 0, then semicolon, and what is the maximum limit here, it's 99, so j is less than 100, j is less than 100, and then semicolon, and then j plus plus, right। अच्छा, इसमें अब मैंने इसको प्रिंट करना है, तो आपको क्या लिखना होगा, सी आउट, ठीक है, सी आउट, if I want to print the values of this array, so I will write here a। अच्छा, इस वाइट बोर्ड में तो आप लोग बहुत कम है, एक ही बंदा है सिर्फ, अब्दुल्ला। मैं वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। मैम शो नहीं हो रहा है, व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा है। ए ऑफ जे आपको ज्वाइन करना होता है ना, ये थोड़े से ये ऑप्शन, इसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट गूगल क्लासरूम का चेंज हुआ है, क्योंकि मैंने जब इंटायर स्क्रीन जब शेयर की थी तो वो बहुत ज़्यादा मिररिंग हो रही थी, तो मैंने सिर्फ स्लाइड्स को शेयर किया है और वाइट बोर्ड को शेयर किया। ठीक है, पहले तो मैं पूरा अपने ये स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करती थी ना, तो फिर आसानी थी, आप वाइट बोर्ड भी देख सकते थे। तो वाइट बोर्ड अब आपको अलग से शेयर करना होगा, सॉरी ज्वाइन करना होगा, ठीक है। चलिए जी, अब स्लाइड्स की तरफ आ जाते हैं दोबारा से, क्योंकि अब वाइट बोर्ड अब आप लोग सारे देख नहीं सकते एक टाइम पे, पता नहीं क्या लीव कर देते हैं, आप क्या करते हैं। ठीक है, वाइट बोर्ड का फ़ायदा ये होता है कि उसमें और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाता है ना। चलिए जी, स्लाइड्स की तरफ आ जाते हैं। व्हाइट बोर्ड, जी, व्हाइट बोर्ड जॉइन हो गया मैम। पहले हमें समझ नहीं आ रही थी, वो आपने ईमेल पे भेजा था ना, पहले तो डायरेक्ट आता था। पहले तो डायरेक्ट आता था ना, ये अभी ये मैंने आज ये मैंने गूगल क्लासरूम ओपन किया, इसकी सेटिंग्स थोड़ी सी चेंज हुई हैं, थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज हुई है। जब मैंने अपनी एंटायर स्क्रीन शेयर की है ना कंप्यूटर की, पहले तो एंटायर स्क्रीन शेयर करती थी तो ये वाइट बोर्ड भी आपको खुद ब खुद नज़र आता था, बगैर ज्वाइन किए सब कुछ आपको, क्योंकि पूरा का पूरी स्क्रीन आपको मेरी लैपटॉप की नज़र आती थी। ठीक है, अब मैंने आज जब इसको पूरी एंटायर स्क्रीन पे किया तो बहुत ज़्यादा मिररिंग हो रही थी, ये स्क्रीन पे स्क्रीन, और इस तरह से लूप में आपको स्क्रीन अंदर अंदर स्क्रीन नज़र आ रही थी। ठीक है, तो मैंने इसलिए अलग अलग ये शेयर किया आपके साथ, स्क्रीन ये स्लाइड्स शेयर किए और वाइट बोर्ड जो है वो अलग से शेयर किए। ठीक है, मेरे ख्याल में मैक्सिमम लोग ये वाइट बोर्ड देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अगर लेट्स सपोज 100 एलिमेंट्स है अरे के अंदर। जी मैम ये जो जी, क्या ये जो जी कौन बोल रहा है, व्हाइट बोर्ड नहीं नजर आ रहा।
ज्वाइन आपने किया हुआ है? चले छोड़े व्हाइट बोर्ड को, चले चले अब ये एग्जांपल पे हम आ जाते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, ठीक है। इसमें हमारे पास 10 एलिमेंट्स है। 10 एलिमेंट्स को मैंने 0 इनिशियलाइज किया है और उन्हीं 10 एलिमेंट्स को मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। 10 एलिमेंट्स को मैंने एक्सेस किया है, 10 एलिमेंट्स को मैंने 0 इनिशियलाइज किया है यूजिंग फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप से हमें आसानी हो जाती है ना, एक एक एलिमेंट हम इसका एक्सेस कर सकते हैं। फॉर लूप स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट अप टू 1 less than the size of the array, and then I'm initializing each of these elements with a 0, right? And then I'm displaying these elements in the tabular form. So here I'm just displaying these elements, right? So this loop j equal to 0 and going up to 9, right? ठीक है, तो ये आपके पास आउटपुट आ गया है, ठीक है। सिंपल है, समझ आ गई है इसकी। लूप में हमने एलिमेंट्स को एक्सेस किया, इसको असाइन कर दिया 0 और लूप में ही उसको हम सिंपली डिस्प्ले कर रहे हैं, एलिमेंट्स की वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। Initializing the elements of an array with declaration. Following is the program initializes an array with 10 values and prints the array in tabular format. So this is another example in which we are going to initialize at the time of declaration. Here we are declaring an array with n with 10 elements of the data type integer, and we are also initializing these elements. 32 will be assigned to the first element of this array, 27 will be assigned to the second element, 64, and then so on. So 10 values have been assigned to the 10 elements of this array, and we are then just simply displaying its values, right? So at 0, n of 0 will be displayed, right? And then in a loop all the values will be displayed on the screen simply. So the first element j is 0 and j here here it's I is 0 and n of 0, this is the first element of an array. So what is the value in the first element of an array? It's 32. So 32 will be displayed on the screen. So in the second iteration, I becomes 1, here 1 is displayed, and then n of 1, what is the n of 1? This is the second element of this array n, and what is the value of that element? It's 27. So simply 27 is being displayed on the screen. Similarly, this loop will be continued for 2, 3, 4, 5, 6 up to 9, and all the corresponding values will be displayed on the screen, right? ठीक है, ये क्लियर हो गया? Yes, yes. देखिए मैंने अभी एंटायर स्क्रीन अपनी शेयर की है ना आपके साथ, तो देखें आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है? Yes, ma'am, yes. जी जी आ रहा है। यस मैम। अच्छा, मेरे ख्याल में सिर्फ इसके अंदर वो मिररिंग हो रही है, इस स्क्रीन के अंदर सिर्फ। देखिए स्क्रीन के अंदर जो है वो स्क्रीन शो हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में बाकी चीजें सही नजर आ रही है ना आपको, ये स्लाइड्स भी और ये जो है व्हाइट बोर्ड भी। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ठीक है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी। देखिए, here we have the A array and elements are from 0 to 99, and we have the corresponding values here. And if you want to display any value, if you want to display all the elements in array in a loop, so simply आपने क्या करना होगा, for j equal to 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 j लेस देन 100, ठीक है, 99 तक जा रहा है तो लेस देन 100 j प्लस प्लस, सिंपली सी आउट आप करेंगे a ऑफ j, ठीक है। तो j की वजह से ये चूंकि इसका काउंटर वेरिएबल है तो पहले a ऑफ 0 होगा तो 5 डिस्प्ले होगा, फिर a ऑफ 1 होगा तो 6 डिस्प्ले होगा, फिर कंटिन्यू करते करते आखिरी क्या होगा, a ऑफ 99 जिसमें 10 है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। बीच में अगर आप ये स्पेस देना चाहते हैं तो आप ये डबल कोट्स के बीच में स्पेस दे देंगे तो एलिमेंट्स के दरमियान में स्पेस होगा, ठीक है। जिस फॉर्मेट में भी आप करना चाहते हैं, जो यहाँ पे जो एग्जांपल्स है उसके अंदर क्या है, टेबलर फॉर्म में वैल्यूज जो हैं वो डिस्प्ले की गई हैं, टेबल फॉर्म में डिस्प्ले की गई हैं, ठीक है। तो टेबलर फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है, सेट डब्ल्यू, ठीक है, मतलब 7 विड्थ साइज का जो है रिजर्व हो जाएगा इन ऑर्डर टू डिस्प्ले आई वैल्यू, एंड 13 विड्थ जो है हमारे पास किसके लिए रिजर्व हो गया है, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। जब एक लाइन जो है वो प्रिंट हो जाएगी तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंडल हम यूज करेंगे, ठीक है। देखिए ये एक लाइन प्रिंट हो गई, एंडल की वजह से क्या हो गया, ये नेक्स्ट लाइन में फिर ये, तो ये एक टेबलर फॉर्म में ये सारा का सारा जो है वो डिस्प्ले हो गया है, ठीक है। इन दिस स्लाइड simply we are talking about array size. Here in this example, what is the array size here? When you write here int, when you declare it int a 100, here the array size is 100. Here we simply write the array size here, but in this slide they have used the constant variable. You can see that const, which is the constant variable int number of students equal to 50. So number of students, this is the constant variable. How we know that this is constant variable? We just write this keyword const. This keyword const is used to specify that this variable is constant variable, right? So const int number of students equal to 50. So int score, in the square bracket we write number of students, ठीक है। Simply we have write this constant variable as an array size here, ठीक है। अभी तक जो हमने एग्जांपल्स की उसमें हम क्या करते थे, int score 50 हमने यहाँ पे लिखा था, डायरेक्ट हम यहाँ पे 50 लिखते थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट 50 लिखने की बजाय हमने क्या किया, we declare a constant variable, constant int number of students equal to 50, and we simply write that constant variable within this. So corresponding value will be there, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इट्स एक्चुअली इसकी वैल्यू क्या है 50, तो ऑटोमेटिकली इसको 50 वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज एन अरे ऑफ 50 एलिमेंट्स, दिस इज एन इंटीजर अरे ऑफ 50 एलिमेंट्स, दिस इज एन अरे ऑफ 50 इंटीजर्स, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, इस स्लाइड में कुछ भी नहीं है, सिंपली हमने क्या कर दिया है, हम क्या करते थे, हम लिखते थे इंट a 100 स्पेसिफाई करते थे, खुद लिखते थे, हार्ड कोड करते थे ये 100, ठीक है। इसकी बजाय हमने क्या किया, वी जस्ट ऐड अ न्यू स्टेप, here we declare constant integer and here the constant integer value is 50, right?
और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कांस्टेंट वेरिएबल का जो नेम है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसकी जो वैल्यू पड़ी होगी वो इसको मिल जाएगी। सही, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। समझ आ गई इस बात की? ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉन्स्ट इंट a underscore size equal to 100. ठीक है, I have added this step here. Then I will just remove this 100 from here, and then here I will write what? Here I will write a underscore size. ठीक है, सही हो गया अब? सो ये बताया गया है आपको सिंपली। डायरेक्ट हम जो लिखते थे, हमने एक कांस्टेंट वेरिएबल पहले डिक्लेयर किया, फिर उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगी। Generating, this is a program, example program in which generating values to be placed in an elements of array. Following example, initialize a 10 element array to the integers this and print in the tabular form. These numbers are generating by multiplying each successive value of the loop counted by 2 and adding 2. ठीक है, अब ये एक प्रोग्राम है, सही, एग्जाम्पल प्रोग्राम है। दिस इज फॉर यूजिंग arrays. Here you can see that I have used this constant int array size equal to 10. Constant int, here we have declared constant integer variable with a value 10, and here I'm using int s, so the array name is s, and array size, the constant variable here I have write its name, array size. And what is the array size? It's simply 10. Within this loop, what I'm doing, int I equal to 0, I is less than array size, I plus plus, s of I, here I'm initializing in the loop. In the first example, I have initialized the elements, all the elements with 0. In the second example, I have initialized at the time of declaration. And in this example, I'm initializing within a loop, and within a loop I'm doing some processing on this counter variable so that a different value at each iteration will be assigned to the element of an array. So within the loop, what I'm doing, I'm using this counter variable I. So in the first iteration, I value is 0. In the second, it becomes 1, 2, 3, and up to array size minus 1. Okay, 2 is being multiplied with I and plus 2. Simply you double the value of this counter variable and then add 2 to the result. So whatever the cumulative result is there, that will be assigned to this array element. So in the first iteration, I is 0. So what will be the first value which is being assigned to s of 0? It's simply 2. Okay? When I becomes 1, then 2 multiplied by 1, 2 plus 2, it becomes 4. 4 will be assigned to s of 1, which is the second element of the array s. And in the third iteration, when I becomes 2, right, then 2 multiplied with 2, 4, plus 2, it becomes 6. 6 is being assigned to the third element of the array, right? So here in this loop, I'm just initializing the elements of this and this array, and then the program is the same. I'm just displaying the values of this element of an array in a tabular form, right? So j, it's mean j is 0 in the first iteration, and j of 0, whatever the value is there, will be printed on the screen, and then j becomes 1,
j of one value will be displayed, and then all these values in the tabular form will be displayed on the screen, right? This is the output. This is simply the output. The output is, the format of that output is the same. The tabular form, header is element and the value, right? 0 1 2 3 up to 9, and then corresponding elements values is displayed on the screen. So in the first iteration I told you that the first element is 2. In the second element of array becomes 4. The third element becomes 6. So all the values has been initializing using this calculations, 2 plus 2 multiplied by I. This being assigned and we just printed on the screen, right? So compute the another example program computing the sum of the elements of an array. Here what you are going to do, you are going to sum the elements of an array. You already did these examples with in your previous examples. You used a sum, you use a total, right? So here we are going to sum the elements of an array. Okay? So coming towards the example, here the same const int array size 10. So we just write the name of this array size within this. You can also write here int a 10. You can also directly write here int a in the square bracket. You can write here 10, but here we use constant variable. We declare constant variable as 10, and name of that variable is being used at the location where we usually write the size of this array. So array size, the value 10 will be there. So this is an array of 10 integers, and here we are initializing. This is the initialization at the time of declaration. So these are the curly brackets in which we are assigning 10 values, 1 2 3 4 up to 10 values to this 10 element array. And as we have to find the total, as we have to find the sum of the elements of this array, sum of the elements of this array. So initially this variable total, or whatever you take, you can also take the variable name as sum. Here the variable name is total. So initially you have to assign it with 0, and then you want to sum up all the elements. So within this for loop, what you have to do is total equal to total plus a of I, or you can write total plus equal to a of I. What does it mean, total plus equal to a of I? This is equivalent to the statements total equal to total plus a of I. ठीक है? तो इसमें क्या होता है, हर iteration में, in each iteration the value of total is being updated, and in each iteration it's a total of the current iteration and sum of all the previous elements in an array. ठीक है? बस ये टोटल होता जाएगा, हर आइट्रेशन में एक नए एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और पुराने के साथ एड अप होता जाता है. फिर नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, in each new iteration new element is being accessed, a of I. Due to this a of I, new element is being accessed and being added to the previous sum, right? So total equal to total plus a of I. तो previous sum और नई value जो है वो add up होके एक नया sum create करते हैं. तो sum जो है वो update होता जाता है और जितने भी elements हैं वो sum up होते जाते हैं. सही? ठीक है? इसमें हमारे पास अरे का नाम ए है ना, तो लेट्स सपोज ये देखें इंट ए 10. ठीक है? इसमें हमने वैल्यूज क्या असाइन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है? ये बीच में कामा आप लगाएंगे और इस तरह से 10 तक जाएंगे. ये आपके पास इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हो जाएगा. ठीक है? अब सम अप करना है जी. 0 to 9 लिख सकते हैं.
इसमें कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, 27, 32, 100 कुछ भी हो सकते हैं। ये तो बस एक आर्बिट्री वैल्यूज इसको असाइन की गई। ओके 0 मैम। भी हो सकता है, 100,000 कुछ भी हो सकता है, ओके ठीक है। अभी ये मैं वही एग्जांपल आपको दोबारा से बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, हेयर वी वांट टू फाइंड द टोटल, सो देयर मस्ट बी ए वेरिएबल with the name total, right? And this total must be initialized with 0 as it's going to sum up all the previous values, right? And in the for loop, this for loop, let's suppose it's I. This I must be initialized with 0. Must we start with 0 as the index of an array start with 0. That's why we initialize it with 0. Semicolon, I must be less than 10. Why less than 10? Because the largest index we can have is the size -1, 9 तक जाएगा, and then I plus जाएगा, ठीक है। हम क्या करना चाहते हैं, what we want to do is total equal to total plus what is the array name, it's A. How can we access its elements in a loop? We just use this counter variable, and this will be served as index, this will be served as a subscript of this variable. So either you write here total equal to total plus a of I, ये लिखें, या आप लिखें total plus equal a of I, दोनों तो equivalent statements है ना, ठीक है। ये expanded form में मैंने इसी statement को, ये जो स्टेटमेंट है टोटल प्लस इक्वल टू ए ऑफ आई, इसी स्टेटमेंट को एक्सपेंडेड फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो चाहे आप ये लिखें या वो जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो लिखें, दीज आर सेम, ठीक है। सो इन द फर्स्ट आइट्रेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल, टोटल इज 0 प्लस total is 0, right? And a of 0, what is a of 0 here? A of 0 is 1, so it becomes 1. So the new value of total is now 1. Total plus 1, it's the result is being assigned again to the total, दोबारा से टोटल को असाइन किया जाता है, अब 1 आ गया। इन द नेक्स्ट आइट्रेशन what is the value of total, total value is 1, so 1 plus a of 1, what is a of 1 here, it's 2, so 1 plus 2 it becomes 3. Now the new value of total is 3 is being assigned to the total, so in the next iteration it's 3 plus a of 2, here it's 3, right? It becomes 6, right? So this process will continue, right? So at the end total of array elements is 55. जितना भी सम है या टोटल है वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। So it was all about arrays, right? How you will declare an array. You just simply write the data type and the name of array, and in the square bracket you specify the size of the array, and you can access how you can access the elements of an array using subscript or using index number. Like if you write a of 0, it means the first element, second element, third element, right? So you can initialize them at the time of declaration, you can initialize at within a loop, you can print the values of an array in a loop, right? And now in this slide what we are going to do is passing arrays to the functions. Here we are going to pass an array to the function. In the before midterm we have done the functions. In those functions, one of the function, if you remember, it was the to find the maximum of 3 numbers. In that function we just pass 3 integers, like so num1, num2, num3, we pass those variables to the function. Similarly here we can pass arrays to the function, just like we can pass arrays just like we can pass variables to the function like num1, num2, num3. Similarly we can also pass arrays
to the function, right? So example is here, it's written int my array 24. So it's an array of 24 integers, and my function, this is the function name, and in this function, let's suppose here I'm calling this function. This is a function call here the function name is my function, and at the and here I'm going to pass this complete array, my array, to this function, right? Yes, ma'am. Simply write the name of that array, right? And they're telling us that we are in the second argument we also pass the size of the array, so that we know that what is the size of the array. We can traverse through the array elements. C++ automatically passes array to functions using simulated call by reference. This is also called call by reference. When you write the name of the array, this is called call by reference. The array name, when you write this array name actually specifies the first location of an array. ठीक है, जब array name आप लिखते हैं ना और फंक्शन को पास करते हैं, तो बैक एंड पे क्या होता है, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होता है ना, मतलब मेमोरी लोकेशंस है ना ये, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है उसका रेफरेंस हम सेंड कर देते हैं. बाकी तो हमारे पास क्या है, अरे साइज है 24, तो कंसेक्यूटिव लोकेशंस होती है वो ऑटोमेटिकली इसको एक्सेस करता जाता है, लेकिन अरे नेम इटसेल्फ जो है वो फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को शो करता है, तो इसीलिए हम इसको कॉल बाय रेफरेंस भी कहते हैं. ठीक है, अगर फर्स्ट एलिमेंट का हमें एड्रेस मिल जाए, रेफरेंस मिल जाए, तो देन वी कैन इजीली एक्सेस अदर एलिमेंट्स, बिकॉज इन एन array all these elements have the consecutive memory locations. ठीक है. So this is again about call by reference, and the other thing is call by value. Call by value is simply like regular simple variables. Such simple pieces of data are called scalar quantities. Here call by value, it means my array. Here here we have the function name is square. In this function, instead of just writing my array, in the previous example I just write my array, this is called call by reference, right? So but here I have write my array 3. It means that this is actually the fourth element of an array, and I'm passing this fourth element value to this function. So my array with the subscript 3, what does it do? It actually access the fourth element in an array. So whatever the value is there, it being accessed. We can access the value which is being stored as the fourth element. We can access that, and here we are passing that value. Here we are passing the value to the function. So it's called call by value, right? Here we are just in the previous example we just write the name of the array, my array. This is called call by reference, right? So here the name of the array, it's just locating the location of the array, location of the first element of the array. So this is call by reference. We have two things, call by reference and the call by value. Index variables can be arguments to the functions. Okay? If a program contains 3 declarations, int I, n, a of 10, and here void my function int n, variables a of 0 through a of 9 are of type int, making these calls legal. It's simply the same index variables, a of 0, a of 3. These are the
index variables, we can pass these to as an arguments to the function, right? ठीक है, तो दो चीजें होगी हमारे पास, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। मैम आज की कॉल रेट में काफी है, जी, आज की रेट में काफी है। अभी तो आपका ये एक लेक्चर पूरा भी नहीं हुआ, असल में बीच में हमारा टाइम काफी वेस्ट हुआ है ना, अभी तो लेक्चर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। वो हमारा असल में टाइम बहुत वेस्ट हुआ था ये व्हाइट बोर्ड के पीछे, लेकिन आप लोगों ने तो अभी कुछ इतना पढ़ा ही नहीं है। अभी तो आपकी टोटल स्लाइड्स 53 है और अभी आप किस पे हैं 31, अभी हाफ लेक्चर हुआ है आपका, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके अंदर, सिर्फ अरे कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे इनिशियलाइज करेंगे, मैं बस उसी को आपको बार बार एक्सप्लेन करूँ क्या, ताकि आप सही तरह से समझ जाएं, ठीक है। मतलब अभी हमने इसमें कोई मुश्किल चीज़ सीखी ही नहीं है, सिर्फ अरे को कैसे डिक्लेयर करना है, इनिशियलाइज करना है, कैसे आप उसकी वैल्यूज को प्रिंट करें, सिर्फ यही सीखा है अभी तक। वो कॉल बाय रेफरेंस आ गया है, मतलब आप अरेज को फंक्शन में पास करना चाहते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस भी कर सकते हैं और कॉल बाय वैल्यू भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब बता रहे हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप, डू यू रिमेंबर फंक्शन प्रोटोटाइप? Prototypes are usually before the main, at the start of the program. Do you remember? Function prototype. फंक्शन जी, फंक्शन प्रोटोटाइप, उसमें फिर आप बताते हैं कि व्हाट इज द रिटर्न डाटा टाइप, व्हाट इज द फंक्शन नेम, व्हाट आर द व्हाट इज द पैरामीटर लिस्ट, इन द पैरामीटर लिस्ट the data types was must, right? Variable names was not must, right? But the data types was must there. So if you want to declare, you can simply write int b. Here the array name is b. How you know that this is an array? You can simply see that its square brackets are there. So if you see there is a square brackets, you can identify it as an array. And here you can see array size. There is no square bracket. It means this is simply a variable. Array size, right? You can also write the same without using these array names. Array name here is b and variable name here is array size. So this is a function prototype in which array names, variable names are not necessary, but its data type is must, right? So we simply write here data type. We cannot skip this. We have to write the data type here, and then we can skip the variable name. The array name here is b. So here we skip that, but in order to show that this is an array, we have to write the square bracket. Then comma, int, we just simply write here int in the prototype. I'm talking about the function prototype. Name optional in prototype. Both take an integer array. ठीक है, अगर दोनों तरह से ये दो तरीके हैं, these are two methods. In the first, we write the name of an array as well as the name of variable. In the second, we do not write the array name and the variable name. Both are same. Array parameters is indicated using, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि कैसे पता चलेगा कि ये array है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स से पता चलेगा कि ये array है, राइट? ओके मैम, क्लियर है। लिखा हुआ no need for array size between brackets, right? Ignored by the compiler in the function prototype.
here if function fill up is declared in this way and array score is declared this way, right? Fill up is called in this way. Okay, you have the function call here, fill up, and here the score is an array. We call that we pass that array, and here the number of scores is being passed in this function call. ठीक है, अब ये एक और प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास array को यूज़ किया गया है और इसमें फंक्शन कॉल्स यूज़ की गई हैं। तो ठीक है, ये बहुत इजी है। मॉडिफाई array, मॉडिफाई एलिमेंट। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या किया गया है कि in this example what they have done, this is a program which demonstrate the difference between passing an entire array. ठीक है, एक पूरी की पूरी array पास करें फंक्शन को, and this example also show you that how if you pass an array element, what is the difference when you pass an entire array and when you pass an array element. So two different things, passing an entire array and passing an array element. So here is the array, its value elements, it's 5 element array, its values are 0 1 2 3 4, and in the loop we are displaying its value in a loop here in this case the last lines here in this what we are going to see out a of I, it means all the elements will be displayed on the screen. And then we are going to call a function modify array. Here modify array, this is a function call in which we are just passing an entire array to this function. What is an array name? Array name is A. So when you write the array name, it means you are passing entire array. This is called by reference, right? Passing an entire array to this function modify array, right? And then we are just displaying its values, right? Another function call, this is modify element. In modify element, we are just sending passing one of the element of an array as an argument to this function. ठीक है, इसमें हम एक एलिमेंट array का एक एलिमेंट पास कर रहे हैं इस फंक्शन को, यहाँ पे पूरा का पूरा array इसको पास करें, array name लिख दिया, this is called by reference, यहाँ पे एक वैल्यू हम इसको पास करें, this is called by value. ठीक है, so this is the difference. ठीक है, अब we are calling a function, it means function definitions must be there. So modify array, in the modify array we pass in the function call for modify array, we pass the entire array here. So in the function definition you have to write here int b and square bracket, you have to specify that this b is an array. So this is the syntax that you write, int b, and this is the square brackets, and then the second argument is array size, which is simply a variable, constant variable. So here int size of array, and then in the loop you are modifying, it's modify array, it means something is going to the values of array is being modified here in this example. Simply in a loop we are going to modify all the elements of this array. So the array name is b, and we are accessing each element of this array b using this k variable of this loop, counter variable of this for loop. So b of k multiply equal to 2, it means each element of this array is being multiplied with 2.
राइट, ठीक है। मॉडिफाई अरे है, ये फंक्शन है जिसमें हमने पूरा पूरा अरे सेंड किया, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करें। एंड द सेकंड फंक्शन वी हैव द मॉडिफाई एलिमेंट, जिसमें हम एक एलिमेंट पास कर रहे थे, ए ऑफ 3 हमने पास किया था, तो यहाँ पे हमें एक एलिमेंट पास किया है तो एक वेरिएबल चाहिए, बस एक एलिमेंट पास कर रहे हैं ना। यू आर पासिंग हियर इन द फंक्शन कॉल एलिमेंट, this is the function called modify element, in which you just pass one element of an array. So it means here in the function definition you just need only one variable instead of array. You just need here one variable so that you can get you can catch that element value in this variable e, right? So e here we are just simply e multiply equal to 2, so whatever the value of e, it's being multiplied with 2, right? Original array was 0 1 2 3 4, and when we call the modify array in which we pass complete array, entire array, this was the call by reference, so each element is being multiplied with 2. So complete array is being modified. In the second function call, it was the call by value on only third element, only the fourth element, which is a of 3, is being is being passed as an argument to the function, and its value was 6, and the modified value it becomes 12. 6 multiplied by 2, it becomes 12. ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, कांस्टेंट हम क्यों यूज करते हैं? जब हम इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। Why we use constant? Array parameters allow a function to change the values stored in an array arguments, right? So in the previous example, all the elements of an array has been modified as being multiplied with 2. If a function should not change the values of an array argument, use the modifier constant. If you want that the values of in an array must not be changed, then you can use this constant modifier. If you want that your array elements should not changed by any function, then you can use this const keyword. An array parameter modified with const is a constant array parameter. If declared array parameter as const cannot be modified. Example, here you can see that in this parameter you have write this const int array, right? Const int. If you write this const, it means the elements of this array cannot be modified. So you will write this const in both function declaration and in the function definition. ठीक है, अब ये कांस्टेंट के साथ ही ये डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, दिस इज द प्रोटोटाइप in which this is the function prototype, right? Compute average has no constant array parameter. Here you don't have any constant array. This code generates an error message because compute average could change the array parameter. चलिए ठीक है, ये आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अब ये आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ठीक है? क्योंकि अरेज को पहले आप सीख लें, फिर हम सॉर्टिंग अरे की तरफ आएंगे, और ये सॉर्टिंग अरे लास्ट ही है, ठीक है? लास्ट टॉपिक है।
लेकिन इससे पहले आप जो है सॉर्टिंग अरेज में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास कोई लिस्ट है, ठीक है, तो उसको आपने सॉर्ट करना है। जैसे आपके पास ओरिजिनल लिस्ट है 3 4 2 7 6, ठीक है, तो इसमें आपने सॉर्टिंग कर रहे हैं, मतलब वैल्यूज़ को आप सॉर्ट आउट करें, मतलब पहले 2 आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, सॉर्ट करें, 2 आना चाहिए, फिर 3 4 6 और 7, ठीक है। ये प्रोग्राम हम लिखेंगे सॉर्टिंग अरेज में जो कि इसको सॉर्ट आउट करता है। इसको हम बबल सॉर्ट वाली एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। ओके मैम। मैम ये क्लासेस मैम जो एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन होंगे या फिजिकल होंगे? यस मैम, सेम क्वेश्चन। क्या ख्याल है, ये प्रोग्राम कर ले? वैसे भी ये लास्ट ही है, इसमें सिर्फ कर लेते कर लेते हैं ना, फिर ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये ओके सॉर्टिंग ओके मैम, कर लें। सॉर्टिंग में क्या है, बस आप ये नंबर्स को यू चेक द टू वैल्यूज इफ दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। वो फिर स्वैपिंग आप कर रहे हैं, स्वैप कर देते हैं इसको। स्वैपिंग में हमारे पास क्या है कि मतलब x की वैल्यू अगर 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो उसमें आपने क्या करना होगा, अगर आप डायरेक्ट कर देते ना स्वैप y इक्वल टू x, तो y में 3 की वैल्यू चली जाती है, लेकिन y की अपनी वैल्यू खो जाती है ना, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, y 3 की है। वैल्यू क्या है, 4 है। तो अगर आप डायरेक्ट अगर y इक्वल टू x कर देते हैं y में, तो फिर x की वैल्यू चली गई, तो y की अपनी 4 वैल्यू तो खो गई ना, ठीक है। तो इस तरह आप डायरेक्ट स्वैप नहीं कर सकते। स्वैप करने के लिए आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल एक इंट्रोड्यूस करना और वेरिएबल डिक्लेयर हाँ, करना you have पड़ेगा। to introduce a temporary variable in which you first assign, let's suppose x to temp, then x equal to y, right, and y equal to temp. You save the value of x first, right, and then assign a new value to x. You save the previous value to some temporary variable and assign a new value to that variable, and then that save value can be assigned to the other value. This is called the swiping. You can see this code, right? Simple. एक temporary variable आप इसको introduce करते हैं जिसमें आप previous value store कर देते हैं, और फिर swiping आप easily कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो जब y इक्वल टू x करते हैं तो y के अंदर जो है वो x की वैल्यू आ जाती है, और y की अपनी जो वैल्यू है ना वो 4, मतलब y में अब 3 आ गया है, असाइन कर दिया, लेकिन y को हमने दोबारा x को असाइन करना है, तो ये फिर y में भी 3 आ जाएगा और x में भी 3 आ जाएगा, जबकि हम चाहते हैं कि x में 4 आ जाए और y में 3 आ जाए, तो इसके लिए हमें टेम्परेरी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना होगा। And here we want to do bubble sort. We want to write it in the ascending order. So if you have the original list 3 4 2 7 6, so what you are going to do, you have to check whether 3 is greater than sorry you have to check whether these elements are in the proper form or not. So you check 3 and 4, it's in the right order, right? Ascending order में अगर हम देखें तो 3 और 4 सही हैं, ठीक है, 3 और 4 सही है, तो इस पे हम कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। लेकिन जब हम आगे मूव किया 4 और 2 के चेक, वी चेक the further two elements, we check the further two consecutive elements 4 and 2, this is not in the proper form. So what we have to do is we have to swap these two values. So instead of 4 and 2, we write in the past one, we write 2 and 4, and then you check 2 7 7 6, right? So 7 6 is not in the proper form, 6 7, you have to swap these, right? So there are different passes, right? In this pass you have this list, pass 1,
and then in the second pass you again check the values. Now it's 3 2, it should be 2 3, so you swap these values. Again 4 6 7 is correct, and in the third pass no changes are needed. ठीक है, पास 2 तक यहाँ पर चेंज हो गया है, लेकिन ये पास 5 तक जाएगा. 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, और हमारे पास पासेस 5 भी हो सकते हैं, या देखें ये 5 पासेस तक हम जा रहे हैं. ठीक है, तो हर पास में क्या होता है, एलिमेंट जो है वो बबल आउट हो जाता है, तो ये सॉर्टिंग होती जाती है. तो अब प्रोग्राम को हम देखते हैं. सिंपली हियर वी हैव द अरे साइज 10 एंड वी इनिशियलाइज हियर द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, right? In the bubble sort, this is the from here bubble sort, this is the main program for bubble sort. For int pass equal to 0, pass is less than array size minus 1, so it's pass is starting from 0, that's why array size minus 1, right? And pass plus plus. So at each pass, what we are going to do, in each pass we have an inner loop. Outer loop was for pass, and in the inner loop we again checking each element of a list. Okay, each element of that array. So in this we are going to check if a of j is greater than a of j plus 1. ठीक है, अगर पहली वैल्यू जो है नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी है तो हमें क्या करना है, स्वैप करना है. मतलब अगर 3 और 2 है, हमें तो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है. तो पहले जो है वो लेस वैल्यू होनी चाहिए एंड देन ग्रेटर वैल्यू होनी चाहिए. बट इफ the situation is opposite to that, if we have greater value first and less value after that, then there is a need of swapping. So if we have a array element a of j, this is greater than a of j plus 1, next जो वैल्यू है उससे उसकी वैल्यू बड़ी है, then we have to swap. This is the program for swapping. ठीक है, this is the program for swap. Then you have to swap the values so that the list is in a ascending order. So this process will continue, this swapping process will continue with for each of the pass. ठीक है, ठीक है, this is the nested for loops. ठीक है, the outer loop is for pass, the inner loop is for to traverse the whole array to the end, right? इसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंट पासेस से हमें गुजरना पड़ता है, और हर पास में हमने अरे के सारे एलिमेंट्स को चेक करना होगा, हर एलिमेंट को देखना होगा कि वो नेक्स्ट लोकेशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है उससे ग्रेटर तो नहीं है. अगर ग्रेटर है तो हमें उसकी वैल्यू को स्वैप करना होगा. ठीक है, जब तक कि पूरी की पूरी अरे के एलिमेंट्स हम जो है वो गो थ्रू नहीं कर जाते, हमें ये हर एलिमेंट को चेक कर रहे हैं हम. ठीक है, तो ये एक पास हो जाता है, फिर हमने दोबारा से चेक करना है, सेकंड पास. ठीक है, ये पूरा जब अरे चेकआउट हो जाता है तो फिर सेकंड पास होता है, फिर थर्ड पास, फिर फोर्थ पास. सही. ठीक है, मैं आपको ये बता देती, ये हमारे पास ओरिजिनल हमारे पास लिस्ट क्या है, ये है. तो दिस इज पास 1, दिस इज फ्रॉम द आउटर लूप, outer loop is pass. ठीक है, so in the first iteration of the outer loop pass 1, and this process is being done in the inner loop in which all the elements of an array is being traversed. ठीक है, so you check 3 and 4, it's in a good order, okay, leave it. Then 4 and 2, we will check 4 and 2, it's not in a good order, we have to swap its value. So all this swapping is being done in the inner loop. So 2 and 4, it becomes 2 and 4, and then again we will check 2 and 7, it's in a good order, and then 7 and 6, it's not in the ascending order, so we swap its value. So this is first pass. So in the
So at the end of the pass one, inner loop is executed completely, right? Inner loop is executed completely for the outer one iteration. For the outer one iteration, inner loop is completely executed, and after the execution, the outer loop is being incremented. Now it's pass 2, right? And then for this pass 2 as well, you have to completely execute this inner loop. Again, you check 3 2. There is a need of swapping, and then 2 4, right? No problem. 4 6 7, right? So it's in a good order. So now it's in an ascending order, but still the passes will be there, right? It will go up to the last pass, right? तो passes जो है वो हमारे पास outer loop है, और ये जो elements की checking है और swiping वगैरह है वो inner loop में हो रहा है, ठीक है? अगर के ऑर्डर में नहीं है तो वो स्वैप करके उसको ऑर्डर में कर देता है। तो ये प्रोग्राम इसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है? ये आउटर लूप है, ये पास वाला, ठीक है? और इनर लूप हमारे पास ये अगर ऑर्डर में नहीं है तो स्वैप करके इसको ऑर्डर में कर देता है, बस। बाकी तो ये डिस्प्ले है, एलिमेंट्स आर डिस्प्लेइंग, एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर देता है, ठीक है? अब देखिए हमारे पास डाटा आइटम्स इन ओरिजिनल ऑर्डर हमारे पास ये था 2 6 4 8 10, ये ठीक है? फिर आफ्टर बबल सॉर्ट द लास्ट द फाइनल लिस्ट इन द असेंडिंग ऑर्डर इज, ठीक है? अब देखिए और आफ्टर दिस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नाउ द लिस्ट इज बीइंग ऑर्डर 8 2 4 6, ठीक है? अब अरे जो है वो सॉर्ट आउट हो गई है। अरे अगर आप इस अरे को प्रिंट करें, अरे की एलिमेंट्स को अगर आप प्रिंट करें तो उसके एलिमेंट्स जो है अब ऐसे मॉडिफाई हो गए हैं कि दैट आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। इजी टू प्रोग्राम, लेकिन ये क्या है, स्लो है, डिफिकल्ट होगा अगर लार्ज अरेज को आप सॉर्ट करेंगे, ठीक है? तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, ठीक है? स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं इसको।